भाई तुम थोड़ा बहुत Hello everyone, happy Friday. I hope you had a great trade day yesterday, you know, act, and even if you didn't, I think what we can say, wins repeat. Not that losing is a repeating cause, but yeah. Today I was expecting a big move in the PPI, nothing happened. Otherwise, that would have been a great setup, just like yesterday. Yup, we had PPI today. Sahil, Yeah, you could see that the previous was like about employment change. It is like 22.1k. It came out to be 46.7. PPI didn't have any changes, and it was like still the same. What do you think about this economic calendar then? I think the best way to understand the PPI data would be we can go and look back into April of 2023, I think, when the actual change and the forecast amount was exactly the same. So 0% change and the forecast was 0.2%, and there we saw S&P 500 rising by 1.3% by the day end and Nasdaq correcting itself to 1.8%. Now, apart from that, this also has a good indication that there are lower inflation expectations, and that would mean that any concerns which the Fed had, or the need to rise, the Fed's need to rise interest to cut down on inflation, that expectation is now considerably lower, which is a very positive thing for the stock market. What we should now be looking forward is an immediate reaction. So maybe in the coming an hour or two, we can start seeing some spike up, maybe targeting the all-time highs or all-time highs. That is what I would expect. Yeah, your statement is a little bit of contradictory, but yeah, I think you are right about it. I definitely agree with that. What is a man if not? Not taking longs. What is a man if not a composition of duality? देखा मैंने अरे बोला था भाई ऊपर जाएगी ऊपर जा रही है देखा बस यही बात करी थी मैंने नहीं बोला था ऊपर जाएगा करेक्शन जो थी यही थी तेरा पॉइंट की सी अगर 0.5 से रिजेक्शन ले पाता है वैसे मुझे ना मजाक सेट क्या है वी वांट टू ट्राई लॉन्ग्स आफ्टर द स्वीप मुझे अभी 5 मिनट का फेयर गैप मिलता भी है वोंट बी यूजिंग दैट फॉर बट आई डू फील वेट यार वो डेली का ओबी जो है वो भी हिट हो जाए
तो फिर वो अभिषेक भाई का वो फिर सेकंड स्टेज ऑफ सेटअप होगा. देखते हैं बाकी तो भाई. But that is something that I want to see, but not हम्म, something that is happening. There's a difference. yep. जब तक 950 के बाद मुझे फेयर वैल्यू गैप नहीं मिलता 5 मिनट का, मैं तो कुछ नहीं करने वाला. और अपने वो 1 हेलो मिनट वाले अकाउंट पे. कवितांश नार्सिसिस्ट राज. वैसे हाई लॉन्डो में एन भूल गए आप. शर्मा. हेलो कुणाल. Welcome to the stream. And there's another giveaway coming up. We need 25 more subscribers. No? Plus style के page पे 5,000 subscribers as I mean followers. Get that and it will be done. A giveaway. Alright, what my drawn liquidity is like 219 or something, because I think it's gonna hit this OB here, but hello Umesh, welcome to the stream. Let's say anything can happen. Our model is simple as always. We don't fuck around in IRL, internal range liquidity, external range liquidity, MFXM. We don't do that bullshit. Not bullshit, those do work, but you know, that complicated stuff. We just wait for the displacement, liquidity, FPG. Simple as it is. Not gonna mix it with anything else. NQ is falling and ES is trying to go up. फिर से उल्टा चलने लग गया है. Retarded market हो रखा है. Just look at one of those, you know. Otherwise, तेरा setup mess up हो जाएगा. Exactly why I'm just gonna No, I didn't. I'm gonna copy your stuff on NQ with 5 micros and then wait for my ES. Casually call him. नहीं मैंने I mean bullshit, like the people who doesn't know anything about it and still talk about it. That kind of bullshit. भाई मैं MFFU करता हूँ. कुछ काम पता सब होता करता है. दिक्कत ये है कि लोग सब लगाने की कोशिश करते हैं एक ही चीज में. Get the point कि okay MMXM works very well. फिर तुम उसमें क्वार्टरली थ्योरी क्यों घुसेड़ रहे हो? तुम CRT जैसी बुलशिट चीजें क्यों घुसेड़ रहे हो? SMT, blah blah blah. Wow. Bro, you can't even follow 2022 model. How you gonna do that shit? है ना? Exactly First learn भाई. to follow one model and then like modify it as you go. Yep. मेरे हो हितांश भाई बड़ी कमेंट मार रहे हैं. AOW in the chat. Can you think there is a bearish 926 candle? Can you check there is a 926? हाँ सारी bearish ही है ना. और 1 minute पे. हाँ bearish candle ही है. I mean it is coming down, so I think that's what you meant by bearish. Yeah, I'm doing good. W in the chat. How are you doing? Yeah, it is. It is. Sarma. Yes, it is. But आप एक ही मॉडल फॉलो नहीं कर रहे हो तो सारे का एज इन होल कैसे कर सकते हो? That's what I'm trying to say. I'm just gonna mark this if we do get the reaction. All right, double in the chat. I guess good decision considering it is Friday. Plus, I think you had a good week.
Good decision. All right. This something. Getting in the demo? Yeah, right. I think you can practice that. सेवन थर्टी को पासिंग है सर होल्ड अप चलिए, हाँ UOM है ना, prelim UOM. Is it red Prelim. folder? ऑरेंज है. No, yeah, orange. Fuck that. You ready to move up? I wouldn't be that sure, you know, because there's no such displacement. You gotta wait. There should be a game week on every Saturday where every can not Velo. तो कौन सी गेम चाहिए आपको? Because most of the people do play Velo here, you know. Guys, why yes is going higher but NQ lower? I think 6 sister model बनने वाला है, अगर सुना है तो आपने. Or kind of like when they go opposite and then in the end they go in one direction. Or NQ had some business to the downside first. ईयर से उल्टा चलता है और दाव तो भाई पंप कर रहा है. यहाँ पे ट्रेड लूंगा. Alright, Mr. Raj, that's always a good decision, you know, considering you had a good week. Also, I think. What kind of games do you need? Let me know. Still, I'll try one chance. W in the chat, as I do always, 1 or 2 tries, you know, at the market. With the low risk, of course. The risk I can, you know, take without even thinking about it too much. $500 subscribers, Kunal. Plus 5,000 followers on Instagram on Sahil's page. Do follow Vedic Trades. I think most of you are from there, so I don't think so. एक तो हो गया वैसे कुणाल भाई, if you don't know. I think you were here. Yeah. Yeah, I don't trade, yes. That's a good setup for me, but I don't trade. Simply avoiding that. For now, I don't trade, yes.
Tell Sagar. Yeah, it looks like buy setups on ES. I don't understand it too much. Yeah, good strategy. अभिषेक भाई कल भी वही हुआ था, वो जो क्या बोलते हैं लो लो जो होता है ना, जो हम ब्लू लाइन नीचे वाली लगाते हैं डिस्काउंटेड पीडीआर, हम्म वो निकालने के बाद ही वो वापस लॉन्ग गया था कल भी, हम्म जो कल रेड फोल्डर था। आज इससे इसने पहले कितने मर्जी स्विप दे रहा है। ये वाली स्वीप दी, right? Just हाँ news low or whatever, हाँ plus the low it had. Plus it is giving reaction from 50 percentage of this week. So if it's reversing with the displacement and everything, might go in. बट इफ यू सी एन आवरली कैंडल, आवरली के पिछले 2 घंटे वाली, ऊपर के एक ओबी से आया आफ्टर दैट। That's a good displacement. I know we might get wrecked because it's Friday and whatnot, but if setup is there, I need to take it. Otherwise, it's gonna mess up with my whole, you know, that back testing, whatever I have done. previously up I don't need to. straight up. Somebody saying Sahil is not talking. Sorry. Sahil is not talking today. What Oh. happened? साहिल ने अरे टॉक किया। थोड़ा आप पीछे थोड़ा बस पीछे बीच जाओ, दे दी थोड़ा स्टार्ट पे। पीछे जाओ, है पहले ना? 15 सेकंड रिपोर्ट एनालाइज कर रहा है ना। Not enough, I guess. Not no convincing. uh actually never mind. क्या शायद कुछ दे रहा है, ट्रेड दे रहा है। What I would the thing is, इससे जैसे लिक्विडिटी नीली नीचे वाली, एक ऊपर 15 मिनट का फेयरवेल गैप अभी टैप होने वाला है जो अभी बना है, राइट? 15 मिनट। एंड या हम्म एंड आई डोंट लाइक द लोज यार कि so हाँ तो what I could potentially do is look for a short छोटा सा, just targeting कोई पास की liquidity है अगर it would, because if it goes up सीधा and disrespects it तब तो longs easily है, it can easily displace, let it displace। वही चीज़ है कि अगर macro kick in करने वाला है then I'll be careful about the reversal। 3 मिनट That's a nice trap, देखते हैं रिजेक्शन आता है। बात ये ऊपर भी अच्छे वो हाइज नहीं पड़े, ऐसा तो नहीं है कि नीचे लोस गंदे पड़े हैं, ऊपर हाइज ऐसे बिल्कुल ऊपर भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, डिडंट टेक दैट आउट ईदर। नहीं, इस पे फोकस करो था। ये तो सवाल हमारी बस की नहीं है, हम नादान है। हाँ let's go Sarmas. I think that's what your name is. लेट्स गो तो हम, उसने मुझे गालियाँ दी थी कमेंट पे। पहले एक पीपीआई था, Sorry, मुझे गालियाँ I'm taking that back. Serious. Can't do. और आकर बढ़िया बंदा है।
बढ़िया बंदे हो भाई, इंटरेक्शन बढ़ा दिया था रील पे ऐसे ही। Okay, missed this trade here right there, but it's fine. I was on high time frame watching that. तो रहा है कि should we just wait? 382, 382, 382. देखते 15 मिनट के 50% से रिजेक्शन। हाँ स्ट्रॉन्ग एक बार स्पेस 3 मिनट देख लो। 3 मिनट 3 minute में भी FPG by another tap into that block and 10 points out. मुझे नहीं दिख रही वो एफपीजी कौन सी FPG? ये कौन सी FPG 3 नहीं है। मिनट पे आउट में एंट्री कर ले। ओह अच्छा स्क्रीन चढ़ा हुआ है थोड़ा सा आई वुड एक्सपेक्ट एक ऐसे फेयर वैल्यू गैप अभी जिस पे हम शॉट ले सकें दिस इज व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट बट बट मेरी बात सुनना बेकार है ऑन वो एट ऑन एनक्यू आई एम नॉट एट ऑल वेल वर्स्ड अरे मम्मी को कॉल करिए यार जरा। अन्नू So देखते हैं क्या होता है देखते हैं in any scenario we are gonna get a trade nice trade and it Am I okay taking this loss here of 14, 12 points? Nah. 15. अगर ये वर्कआउट कर गया I'm gonna be so pissed. हम चुप हैं हमने कुछ नहीं बोला हम चुप हैं बोला तो था वैसे। मैंने कुछ नहीं बोला था मैंने कुछ अबे यार मैं जो ये रहा हूँ दिस इनके बिना मैं मुझसे मुंह बंद रखता हूँ भाई आई हैव नो क्लू भाई क्योंकि I mean, no, it's fine. Precaution is always yeah, just in case we do end up missing this one we can just wait 10 more minutes वो जो consumer sentiment वाली चीज़ है it won't really do anything but I think वो चौक खत्म कर देगी जो अजीब सा चल रहा है market because even though it is moving in a direction it's not leaving fair value gaps for some reason जो बहुत बेकार चीज़ लग रही है मेरे को okay never mind जो करना है वैसे छोड़ो Yes, it's 8:30 going आ up, गई so है NQ will end up. Ah! I think 1 gem 1 was it? Down there. 11 to 11. Easy. Yeah, it's fine, you know. It's a new day and whole new session. It's been only what, 20 minutes? Yep. Even if we do take trade here, I think it's gonna mess up. 18 point stop. But we need to find 36 point in it. Plus. There you go. There you go. Easy 1 gem 2. There you go. New day. Fuck. पर क्या परफेक्ट सेटअप था एफपीजी के बिना भी 8 पॉइंट का स्टॉप था मुझे रिस्क ले लेना था my bad I guess it's fine there's still lots of potential to the upside till this high you know so there's nothing to worry about until
we go into premium. So what will be the premium of this? Okay, we need to buy lower than this level. No, do so. I'm just gonna go on micros because now taking this trade 1 minute. Okay. Okay, I'm buying right there. Let's see how it goes. It's fine if I take this loss because I'm in with so less risk. This block, hitting it, flushing it, as soon as we got into it, it's fine. Target. Okay, I got a thoda lower the entry than Yeah, you. that's better, I guess. But I'm It's a recording straight too, away so plus. As soon as we go into tap, I don't know what happened. It's fine. 17 point SL with 6 micros, it's like 9 point. I'm okay with that. I'm not gonna take whole TP here. Step by step if it does go up. This high, and then again that. But I'm not gonna look at the chat now because right now it can flush us and then go back up again, but I'll take that risk. So this would be your TP1 area. Not top. What is this? If it does go back up again, don't need this kind of candles because now it can flush. It has to close strong. Yeah, just like I said. Just going to go on 3 minutes for the peace of mind. Just check 1gem1. Where is your 1gem1 and book most of your, because there's a news inside. I got my ones and ones, but I didn't book it because मैं बेशरम हूँ. Yeah, now we This can one. hope for the best only. Can't we? I'm just gonna set the limits order because yesterday I messed up a lot. And I might take full because there's a news in the site, and if I don't see the TD by this doesn't mean TP2 doesn't mean that you need to take that. I'm calling out by your name. This is not let's see, now we don't do anything. Now we let the market do its thing because nothing is in our hand right now. If it has to take out SL here, it's fine. I'm not break evening until my TP1 gets hit or TP2 gets hit. I'm letting it play out. Thanks, Mr. That's fine. I'll take that, Daddy. If it's smash, I'll take that. It's not red folder news, so I can trade in that, so it's fine. I'll take that smash and be done for the day. Not, I'll have another try after this as well. Okay, I'm out. मेरा हो गया. I got a 1:2 almost. 18 into 18, I think I need to count. 13, 18.
My entry was that Vic. वो नीचे जो Vic type नहीं बनाया है before the river नीचे जा रहा था and then creates a doji. Oh, I don't know what it's called. I think it's called the doji. I don't know what it's called. I entered there. Bro, how you took this before 15-minute IRPG? Again, you're complicating stuff, Sagar bhai. Look at easy where the market is flowing, where the PD arrays are. This is not a win yet, of course, but it did go in our favor a lot. Like 18-20 points is a lot on 1 mini if you are in with 1 mini, but again, yeah. This is not a broker is trader weight, so I think it's gonna be 1 NQ for $4 something round. Yeah, I'm just gonna stay on 3 minutes because 1 minute is not to my liking right now. I don't trade Bitcoin, so I don't know. Again, we took trade in bit late. This was our first entry. They have given us 1 gem 1 easily. But that's a hindsight. And you know, there's no hindsight here. Just gonna let it play out. Let's just, I don't do this, but let's just have a look at what. Yes, it's just straight up pumping. Oh, no, I'm not on this. I'm here. I would hope that NQ takes inspiration. Hmm. 3 minute is not reacting well. Yeah, there you go. Oh, that was a news. That was a news. What? Your SL won't trigger. Your SL won't trigger. Yeah. It didn't trigger. Why orange It folder didn't is trigger. doing this? I think PPI का effect अब इसके साथ check in कर रहा है. How much is you? फाइनेंशियल जिस पे वो थी ट्रेड फोल्डर Too quick. $400. What? मेरा भी 450. It should be what? अभिषेक भाई 500 18 into Ah, 6. How much slippage was it? way too much. It मेरा was डबल स्लिपेज कितना था ये? कितने पॉइंट थे? 20 पॉइंट मान ले 15 12. पॉइंट स्लिपेज आया. Yeah. ठीक है, नहीं. I think you got 20 पॉइंट कैसे no गया no no. 20 पॉइंट 25 पे मिला छे 25 पे. Check your executions and see where you. I think you got the almost the correct fill. Who, me? Almost. I think so मेरा because charge. What was your shell 24 limit? मेरा 320. Cell filled at सेम 324.50 मेरा भी से 39.5. You got at 39.5. So they filled it. ऊपर. They filled it at lowest price, right? Yeah, it's a smash. Somebody did mention it in the chat, so it's fine. 39.5 ना था फिर. मैंने बोला था. Well, I think that was a visual glitch. I think everyone got filled at the correct price. I think so. No. नो भाई आई गॉट 20 पॉइंट्स स्लिपेज Me too. मेरा भी. Okay, you got slipped or you. I think चलो in ठीक है. MFFU you will हाँ. get slippage. In any other part you want. That's it. And now it's just FX भी है FX. भाई
Now it's straight away going back It's up. all right. What? Was the I mean, Yep. what the hell we can do about this? ऑरेंज शोल्डर एक्सपेक्ट नहीं था ऑरेंज शोल्डर ऐसी हरकत करे जैसे like वो फाइनेंशियल जिसपे वो दिखा रहा था रेट I heard it, Hiran. I heard it. How about look at that? अभिषेक भाई ये स्टॉप लॉस इसे लगाना नहीं चाहिए जब तुम ट्रेडिंग कर रहे हो दिस इज व्हाई वी ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉसेस लाइक पर्सनली मैं कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ Just after it ठीक takes है it out on the lows, it goes to the TP1. How is that possible? Yeah, I mean, it's our 33-point stop. okay We are nowhere close to blowing outside. As soon as it, no, TP1 वैसे trigger होता. TP1 वो 1 मिनट पे दिखा 1 मिनट पे पता चल जाएगा अगर विक होगी तब तो नहीं हुआ होगा Weak. अच्छा विक क्या है ना मुझे लगता होता फिर नहीं होता MFFU absolutely not. मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता मैं एफिलिएट हूँ मैं बिक ये- चुका हूँ साहिल भाई ये इसमें होता है कि मतलब आज हो गया क्या हो गया मतलब जो स्टॉप लॉस बहुत लेट ट्रिगर हुआ हाँ वो कभी कभार होता होगा है कि एंड ऑफ द वॉलेटिलिटी अगर है ना तो फ्यूचर्स भी स्लिप कर ही देगा बट लेकिन ऑरेंज होल्डर में ना यू कैन होल्ड थ्रू मोस्ट ऑफ द टाइम बस ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा वो आ गया विक आई वो भी Orange folder movie नहीं करता है. I don't know what. हाँ What was the भाई news called? इसीलिए UMO सेंटिमेंट That is nothing. UMO Why it had this kind of a कंज्यूमर सेंटिमेंट या डिफरेंस भी नहीं है कोई फोरकास्ट वाज 79 and actual one was what they've actual held damage through it in many days though मतलब even if we look at previous streams there would be streams जहाँ पे हमने उसके through hold करा है and we had trades with it आज if that. it had it today is a different day and बाकी सब नहीं था But इसको I've करना seen ही it था multiple कुछ. times इसको वही करना ही था कुछ. इसको है ना ऊपर जाता है. नीचे क्यों आया? साहिल भाई अब वो कैंसिल करना पड़ेगा क्या वो अकाउंट की वो अपने आप कर देंगे क्योंकि वो डेली वो तो हिट हो गया और आज तो वो डिलीट डिसेबल कैंसिल कर दो कैंसिल कर दो अकाउंट वो वहीं पे टर्मिनल वहां पे जाके डैशबोर्ड में हाँ और अभी माई फंडेड का ना लेना मत मैं उनसे बोल दे मैं कोशिश करता हूँ कि वो कुछ इम्प्लीमेंट कर दें पर वो मैथ वाला स्टेज गाया शायद से होपफुली वो हाँ मेरे गेम्स देख ले तो वो Thank God that I बात came कर back on the micros, knowing that it's gonna be risky. I didn't go with minis. Topstep में अच्छा फील मिला होगा. I think with mini it was 360, but with micros I got $400 slippage. Double the कैंसिल amount. करते ही वो आ गया एक्सपायर्ड का हाँ बस हो गया तो कैंसिल ही हो गया होगा अपने आप बस एक और बार चेक कर लेना बस Yeah, the trade was right, the bias was right, just a fucking orange folder news. Look at that, straight to my TP2. यस 5 मिनट का फेयर लगा बनाया ही नहीं यार क्या शिट है इंडेक्स No, it's gonna be direct into bank cashes. Can't use wise anything. Now, do something about this. Like our SL was here. अभिषेक भाई अगर कोई इस वाली ट्रेड को होल्ड कर रहा हो तो वो कब तक होल्ड करे
कर ही लो, अब TP2 भी हिट हो चुका है तो निकाल ही लो, क्या हाँ वो आ गया, वो हो गया, ऑर्डर फिल्ड आ गया। बढ़िया है। हाइपोथेटिकली अगर किसी ने I स्टॉप did लॉस take ना a लगाए, re-entry. I didn't take a re-entry though. I did take a re-entry. ओके तो कर ली। मेरे को था कि हम सही है भाई, हम सही, हम कभी गलत नहीं होते, और ऊपर से हम लॉन्ग मार रहे हैं। हाँ और शेर का बच्चा कभी लॉन्ग में गलत नहीं होता। Bro, Exactly going what happened. straight to fucking क्या पंप आ रहा है भाई, लेट्स गो। कोई नहीं यार, भाई good मुझे trade. भी स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए था, नहीं, मेरा मैंने पास। री-एंट्री लिया, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए भाई। अरे भाई नहीं इसका क्या वो नहीं, था ना लास्ट क्या डे था। मेरा क्या भी तो वो आज वो भाई। रिबिल था अरे तेरा, इसके ओके। अकाउंट का लास्ट डे है। हाँ तो मैंने इसको ऐड कर लिया था यहाँ पे जैसे, या फिर आज या फिर पार, कोई ना कोई ना। गाइस ये थी मेरी ट्रेड। या कुलदीप नेक्स्ट अकाउंट अगर लेगा ना क्रिप्टो से पे कर देना, अगर तेरे पास वॉलेट है क्रिप्टो वाला। हाँ उसमें क्रिप्टो से तो मैं कर सकता हूँ, पर उसमें भी तो फिर बिलिंग का वो कुछ। तो बिलिंग उससे क्रिप्टो वॉलेट से ही डिडक्ट हो जाएगी, रीबिलिंग उस पर दिक्कत नहीं अच्छा आएगी। हाँ ये कार्ड का ही सिस्टम है भाई, कार्ड का रीबिलिंग में होता है। एपेक्स का भी मेरा रीबिलिंग एपेक्स का काम ही नहीं करता, वो हर बार लिंक भेजते हैं तब होता है। ये लोग तो लिंक भी नहीं भेज रहे, इन्हें ही हाँ भेज देना चाहिए। वही कितना टाइम लगेगा इनको एक लिंक बनाने में। भाई हाँ डीडी भाई। हाँ आज भी देख लो। Kassis, you don't get to tell me what to do. I just lost a trade being right, so how about you not do not teach me. अब क्या देखना है इस चार्ट में, बताओगे आप? रफीक भाई अगर कोई अभी भी होल्ड करके बैठा हो तो तो कर ही लो भाई, जन्नत तक क्या कर सकते हैं। चांद तक, है ना? फिर चांद तक। नहीं चांद तक, जन्नत तक भाई, चांद तक क्यों? W chat no MFF is not bad or anything, काफी अच्छी firm है, they pay out, that all should matter, that they pay out I mean and there is no स्लिपेज slippage। हर एक में आएगी, हर एक में हाँ आएगी। हाँ slippage हर में आएगी, MFF एपेक्स just में भी। has like थोड़ा ज़्यादा। हाँ तो what you can do is भाई just contract size accordingly, और the second thing is वो slippage won't even matter, जैसे if Abhishek is consistent with his profits, he got slipped out today, doesn't matter, he's gonna just make it back tomorrow or maybe in the next trade. So if you're consistent, you're profitable, it won't really matter. It's not like Forex ki it's eating into your profits too much. There goes the high. Okay. Everything was right, just Oh, that 17 people are watching us today. thing was fucking on spot. Oh, मैं स्ट्रीम पे दिखता हूँ कि मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। तेरा कैमरा मुझे ज़्यादा स्किनी दिखा रहा है। फॉर द स्ट्रीम मुझे मेरा कैमरा मुझे ज़्यादा स्किनी दिखा रहा है। एक्चुअली मेरा टी शर्ट है जो मैं बिल दूँ, ठीक है? नहीं I answered that, Kassis bhai. I answered that you do not receive payouts from Wise. You receive payouts directly into your bank. Do you wanna see? Does Topstep pay out in India? the first one. अब गूगल ही दिखा रहा है। ये ना, इसमें लिख जाएगा और इसमें भी है पूरा आर्टिकल, पेमेंट मेथड, सब कुछ। दिख नहीं रहा भाई, हो स्किनी सिक्स बढ़िया है भाई, बढ़िया है स्किनी, है ना?
You और receive यहाँ से एक ऐसा straight शॉट to है their bank to your bank payout. Kashish bhai, you don't get through anything in Topstep. Is that answer? Does that answer your question? क्या ट्रेड होती भाई, अगर थोड़ा सा भी कम स्लिप, थोड़ा सा भी कम नीचे आता है ना, और इस लो को थोड़ा अगर स्टिप पे हिट कर देता तो भी लॉस नहीं होता। फॉर अ ट्रेड। अभिषेक भाई आपने जो पहला ट्रेड बनाया था, जो फर्स्ट ट्रेड मतलब जिसमें प्लान कर रहे थे एंट्री करने का, जब जस्ट वो कैंडल क्लोज हुआ था, वहां अगर ट्रेड लेते तो स्टॉप लॉस क्या रहता? If you are taking long from here, stop loss will be here. वन जम टू भी आराम से दे देता। हाँ नहीं दे देता, वन जम वन दे देता एटलीस्ट, वन जम 1.5। स्टॉप लॉस इधर ही नीचे है, उस ब्लॉक के नीचे और इस कैंडल के नीचे है ना, प्रोटेक्टेड रहते। Not nobody will ask anything, as Kashish bhai, you request the payout. If bank ask anything, you go and tell them what you do, है ना, they will pay you out. There are thousands of people do get payout from Topstep, and me as well including. I never had any problem. Let's go Deepak bhai, GG's. तो फर्स्ट पे आउट तक पहुंच गए हो तो रिक्वेस्ट डाल दो, है ना। साहिल भाई ये रॉस एफएक्स कौन है भाई? इसने तो बहुत तगड़ी ट्रेड लिया है। इस एसएल इसने अलग रखा भाई था। लाइव चल रही है, होल्ड ऑन। लॉकडाउन में अभी कौन? दीपक भाई? ट्रेड बढ़िया थे। A good note from this trade. न्यूज़ ना होती तो भाई मैंने क्लिक कर दिया टॉक वन गलती से। I put my order on 50% of ES. now let's see if fast it dumps from here. Going to these lows. If it does, then I will take another trade. And उसमें भी SL गया तो फिर I am done for the day. But doesn't look like it. It is way too strong on 1 hour. भाई क्या इधर किधर से हम इन थे, और कोई बोल रहा था लॉन्ग ऑन एनक्यू इज डेंजरस। आई थिंक उसने सेकंड एंट्री के एसएल को टारगेट किया है, फर्स्ट एंट्री जो लेते हैं उसका एसएल टारगेट नहीं हुआ शायद। मेरा एसएल सेम जगह पे होता दोनों में। अच्छा 2 वीक्स का सिस्टम मोस्ट मैक्स। मैं फर्स्ट एंट्री में बैठा। हमें क्या पता ऑरेंज पोलो इतना दम करेगा, और वो भी डाउन साइड, है ना। साहिल भाई जो नीचे से रिवर्सल आया है इसको ही यूनिकॉर्न बोलते हैं क्या? जो नीचे से रिवर्सल वो टर्टल से पता है। यूनिकॉर्न इज ब्रेकर प्लस एफपीजी। ब्रेकर प्लस एफपीजी। आई थिंक हाँ यहाँ कहीं उस एफईजी पे नहीं बना है। था। हाँ 1 मिनट पे बना था, बहुत
पहले बना था पर आई थिंक यूनिकॉर्न ईएस पे बना था, एनक्यू पे बना था, आई डोंट नो। जैसा पिकल ने डाला होगा अगर बना है तो। 10 AM को बना था, जहाँ पे हमारी एंट्री ओके। है, ऑलमोस्ट जहाँ पे हमारी एंट्री है, हम हाँ सेम एंट्री, सेम एंट्री है। रोज रन है और उसके बाद हाईएस्ट हाई करने के ऊपर। ओके। हम्म, अच्छा नहीं, कल का डाला होगा आज। वो नहीं बना, एफपीजी नहीं बना। क्या क्या पंप दे रहा है अब ये, यस, बट एंट्री नहीं देने वाला अब मेरे को 5 मिनट पे। ये शिटी चीज रहती। छोड़ो भाई, आई थिंक आई एम गोना क्लोज माय अकाउंट। Yeah, me too. I'm not gonna trade या anymore. मे बी पीएम रिवर्सल अगर आता है तो ठीक है, वरना वैसे भी फ्राइडे है। Say 400 loss, I can take it. It's fine. 2 मिनी लगा के छोड़ देता हूँ अगर पंप हुआ तो। वो मिनी लगा के छोड़ देता हूँ। तो माइक्रो, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ऑल टाइम हाई इस टारगेट। अगर ऐसा कुछ हुआ तो देखते हैं फिर प्रीमियम में, है ना। To these lows. Alright, saying that we had a valid entry on NQ. That's what I think. But news just fucked us up, wicked us out. But it's fine. We do take that those L's, in consideration, like in mistakes. But I'll see you guys on what, Monday. Until then, stay safe, stay safe. Yeah, don't forget to like. I need to remember everything in one flow.